Hello everyone. आज क्लास रो टॉपिक होची लेमा नंबर 4. This is the last installment of fundamental theorem of finite cyclic group. जो माने यहाँ पूर्व लेमा नंबर 3, 2, 1 को देखी नांती चाहिए देखी नियंतु बहुत ही इंपोर्टेंट थियोरम ये ठीक अच्छे ये चारिटा टोटल इंस्टॉलमेंट अच्छी एंड लेमा नंबर 1, 2 and 4 आर इंपोर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स. चलो तो लेमा नंबर 4 को डिस्कसन करवा एंड ये लेमा नंबर 4 को डिस्कसन कर सारा पर यूनिट नंबर 2 एंड हम ठीक अच्छे. देन वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 1. आम यूनिट नंबर 2 फास्ट स्टार्ट करथिले एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट रू एंड आज यूनिट नंबर 2 को आम एंड करवा. चलते स्टार्ट करवा लेमा नंबर 4. सपोज दैट Z is a finite abelian group of prime order and if Z is equals to H1, H2 up to Hm. These are the internal direct product of H1, H2 up to cross Hm and K1, K2 up to Kn where H and K's are non-trivial cyclic subgroups of with the order is H1 order is greater than equals to H2 order and the pattern is repeating up to Hm order. Okay, similarly K1 order is greater than equal to K2 order and similarly up to Knth order. Okay, then we have to prove that M is equal to N here and Hi is equals to Ki order for each I. Okay, चलते प्रूफ करवा. सो बर्तमान आम कौन करवा ना गोटे ग्रुप नवा फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. सो लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप विथ ऑर्डर p टू द पावर n. ठीक अच्छे जोटा कि आम कनसीडर कले वी विल यूज मेथड ऑफ इंडक्शन हियर जोटी आम n इज इक्वल्स टू 1 नवा. दैट मीन्स जदि n इज इक्वल टू 1 नौचे तो ये p टू द पावर n जगह के हम p टू द पावर 1 दैट इज ऑर्डर ऑफ z इज इक्वल टू p. सो द रिजल्ट इज ट्रू. नाउ वी विल एज्यूम दैट आम कौन एज्यूम करवा तो एक्जाक्टली लेमा नंबर 3 भाया ही एटा होची. वी विल एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर kth. दैट इज 1 is less than equal to k is less than n. We have proved the result is true when k is equals to n. That means that method of induction I use करछे k is equals to n by the result is true. Now z to the power p is a subgroup of z. That is g to the power p can be represented as h1 to the power p cross h2 to the power p cross hm to the power p. तो ये जो g ग्रुप को आम केमती रिप्रेजेंट करथिले एठी साइक्लिक ग्रुप मानकर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट रे h2 क्रॉस अप टू hm रे. ठीक अच्छे एठी z भितरे जदि z टू द पावर p एठी किछि गोटे रहउची z भितरे एठी जदि z टू द पावर p इज एनी सब ग्रुप ऑफ z रहउची दैट मीन्स g टू द पावर p भितरे मध्य एठी निहाती एभली भाबे साइक्लिक ग्रुप माने रहउथिबे जोटा कि h1 टू द पावर p h2 टू द पावर p एंड hm टू द पावर p. बुझियला एतिक जिंस. दिस मीन्स दैट वी कैन आल्सो राइट दिस वन कि gp इज इक्वल टू h1 टू द पावर p क्रॉस h2 टू द पावर p cross hm to the power p. That's it. Now here we can similarly we can write this one that z to the power p is equal to k1 to the power p cross k2 to the power p cross up to kn to the power p. बुझीगला. सो इन दैट केसेस आमको एठी m इज इक्वल टू n भी प्रूव करिवार अछि एंड ता सहित एठी आमको आउ कोन प्रूव करिवार अछि hi इज इक्वल टू ki फॉर each I इज इक्वल टू 1 to up to n where m dash is the largest integer of I such that hi the order of hi must be greater than p and n dash is the largest integer of I such that ki order is greater than p. तो एठी कौन होची ना hi and ki एमाने कौन होचंदी ना p ठारो greater than एठी होचंदी. Since Gp is a subgroup of Z, आमे कौन जानचे कि Gp Z to the power P order is less than order of G. ता माने कौन ये जो Gp होची कार subgroup होची G रो subgroup होची. Then by method of induction we can prove that
एम डैश इज इक्वल टू एन डैश ठीक अच्छे एठी आम ये जिनसा को प्रूव करें कौन एम डैश इज इक्वल टू एन डैश बर्तमान आम जदि एच आई इज इक्वल टू के वाई एठी आम जदि प्रूव करवा फॉर ईच आई इज इक्वल्स टू 1 to up to m dash it means that आम आपको केमती लिखिपर ना ऑर्डर ऑफ एच आई इज इक्वल टू पी टाइम्स एच आई टू द पावर पी ठीक अच्छे ये कौन प्राइम मल्टीप्लिकेशन हम इट मीन्स दैट आम ये केमती लिखिपर को द ऑर्डर ऑफ एच आई इज इक्वल टू पी टाइम्स एच आई टू द पावर पी ऑर्डर फॉर ईच आई दिस मीन्स this is equal to p into ki order to the power p is equals to ki order that is for each I is equals to 1 2 up to m so आम ये बर्तमान कौन प्रूव कले ना एच आई इज इक्वल टू के आई नाउ वी हैव टू प्रूव दैट आम ये कौन प्रूव करवा द नंबर ऑफ एच आई of order p is equals to the number of ki of order p that is m minus m dash is equal to n minus n dash तो ये आम बर्तमान प्रूव करवा ओके नाउ वी हैव आम पाखे कौन अच्छी ना g is equals to the internal direct product of h1 h2 up to hm then तार ऑर्डर को आम कौ भाई लिखिपर ना h1 ऑर्डर h2 ऑर्डर अप टू hm ऑर्डर okay so this means that h1 order h2 order up to hm dash order and up to hm order तो एठी हमें कौन कले ना hm भितर एठी hm dash नेले बिकॉज ये हूँ सब ग्रुप ठीक अच्छे ये क्या भितर अच्छी ना g भितर अच्छी ठीक अच्छे दैट मीन्स hm dash order तो आम या बर्तमान केमी लिखा ना h1 order h2 order up to hm dash order that is ये जो एरिया अच्छे अप टू एम एथ जाके आम या कौ भाई लिखा p इंटू पी अप टू p टाइम्स m माइनस m डैश ठीक अच्छे बाकी एच एम डैश ठारू एच एम जाके आम या भाई प्राइम मल्टीप्लिकेशन लिखिले इन दैट केसेस बर्तमान आम केमती लिखा ना h1 ऑर्डर h2 ऑर्डर अप टू hm ऑर्डर ये जो टोटल टर्म अच्छी ना एति मुझे गोटे जगह के लिखिदेली ना p टू द पावर m माइनस m डैश सो सिमिलरली आम एठी जेमती एक्जाक्टली आपको एटा को आम लिखिले कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू h1 ऑर्डर h2 ऑर्डर अप टू hm डैश ऑर्डर p टू द पावर m माइनस m डैश सिमिलरली आम आपको ये लिखिपर कौन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू k1 ऑर्डर k2 ऑर्डर अप टू kn डैश एंड विथ मल्टीप्लिकेशन p टू द पावर n माइनस n डैश सो h1 ऑर्डर h2 ऑर्डर अप टू hm ऑर्डर into p to the power m minus m dash which is equals to k1 order k2 order up to kn dash that is p to the power n minus n dash so in that cases आम आपको केमिति लिखि परिबा ना जेहेतु ये इक्वल होउचंदी सो आम एठी ये जो मल्टीप्लायर से माने अछंती प्राइम मल्टीप्लायर से मानको एठी इक्वल कर दवा दैट इज p to the power m minus m dash इज इक्वल टू p टू द पावर n माइनस n डैश ठीक अच्छे तो ये आमर के m माइनस m डैश इज इक्वल टू n माइनस n डैश सो दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू n जहाँ आम ये लिखिपर p1 टू द पावर n1 p टू द पावर n2 एंड pk टू द पावर nk ओके सो ये आमर के p1 टू द पावर n1 जहाँ मुझे g p1 लिखिली ऑर्डर सो ये को मानकर ना ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ gp1 gp2 एंड gpk तो ये आमर प्रूव कर जोटा कि आम बर्तमान प्रूव करें ओके ओके दैट्स इट चलो सो ये आपंकर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड है ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट क्लास रे आपणकर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हम जोटा कि हूँ ऑटोमॉर्फिज्म ओके सो या दैट्स इट थैंक यू सो मच